Hello and welcome you all in this another biology tutorial. Today we are going to study the part of a respiration, and that is the external respiration. Okay, so let us start today's video. In the process of animal respiration, there are four steps. First one is the breathing, in which exchange of gases takes place between atmosphere and lungs. The second stage is the external respiration, in which exchange of gases takes place between alveoli of lungs and blood capillaries. Third step is the internal respiration, in which transport of oxygen and carbon dioxide takes place. And in the fourth step, which takes place inside the cell and mitochondria, which involves the glycolysis, Krebs cycle, and electron transfer system. And at the end of the cellular respiration, the ATP molecules are generated and the aim of a respiration process is achieved. Okay, so today we are going to discuss the external respiration here. So let us start. Here you can see the diagram of a respiratory system. Now, respiratory system consists of nostrils, nasal chamber, pharynx, larynx, trachea. Then inside this lungs, there are bronchial tree, in which the when trachea in the middle of a chest cavity divides into primary and secondary bronchi. Further, primary and secondary bronchi divides, and primary bronchi divides and secondary and branches are bronchi are formed. Then secondary bronchi further divide, they gives rise to tertiary bronchi. Now tertiary bronchi ends into a bubble like structure or bunch of grape like structure, and that structures are called as alveoli. As you can see, the structure is enlarged here. So these are the bunch of grape like structure that they are called as alveoli. Now these alveoli are surrounded by a blood capillary network. Okay, alveoli are surrounded by blood capillary network. From how these blood capillaries or the blood comes from? So see, you see here the red colored and blue colored blood vessels. So this red colored blood vessel is uh, yes, so this blue, first of all, this blue colored blood vessel is came from heart. So it is a branch of a pulmonary artery. Okay, here the pulmonary artery is of a blue color. This is one of the exception, that the arteries always carry the oxygenated blood, and they are always shown in a red color. But here one exception, that pulmonary artery is it carries deoxygenated blood from heart for the oxygenation process. So it carry deoxygenated blood, which carry means it carries the um, more concentration of a carbon dioxide than the oxygen. So this is shown in a blue color. So this is the pulmonary, blue colored pulmonary artery, and which further divide and redivide into blood capillaries, and these blood capillaries inside the lungs, they surround to these alveoli. Okay, at the same time, when these uh, blood releases carbon dioxide into alveoli and combine with the and the oxygen from this alveoli enters into this blood capillaries. Now the oxygenated blood capillaries start reuniting. So after combination, or after the hemoglobin and oxygen combination, so these blood capillaries start reuniting and they form a pulmonary vein. So this is the red colored pulmonary vein. So this pulmonary veins again uh, reunite to form only two veins actually forms from each lungs. Two pulmonary veins from right and two pulmonary veins from the left. So such two pulmonary veins then enters or move towards the
that means they are carrying now oxygenated blood, and such oxygenated blood they carry towards the heart, okay, and particularly to the left side of the heart. So here we are going to discuss that exactly which things are responsible for the exchange of gases at alveolar level, okay. So here exchange of gases takes place, means what happens? So uh, whatever the air you inhaled or the fresh air you inhaled, that fresh air contains the oxygen, okay, and large amount of oxygen, and that oxygen is present in this alveoli through the nostrils, larynx, trachea, and then into the at the end of this alveoli, when that fresh oxygenated air reaches to this alveoli, then at the time this pulmonary, when these blood capillaries contain the deoxygenated blood which contain large amount of carbon dioxide, so the exchange takes place. Carbon dioxide from the blood capillaries is removed, or it is diffused into the alveoli, and the oxygen from the alveoli enters into blood capillaries. तो इस तरह से जो भी हार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाता है, और एल्वियोलाई में जो फ्रेश एयर है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, और ये ब्लड कैपिलरीज वापस रीयूनाइट होती है, और यहाँ से लंग से टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स, एक लंग से 2, इस तरह से दोनों लंग से 4 जो पल्मोनरी वेन्स है वो निकल के हार्ट की तरफ जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एवोर्टा में वो ओपन होती है. सो हियर द एक्सचेंज टेक्स प्लेस, बट फॉर दिस एक्सचेंज few things are responsible. So what are that few things are responsible? First of all, यहाँ पर जो walls of the alveoli and blood capillaries are made up of a simple squamous epithelial cells, okay. तो ये एक alveoli का एक enlarged diagram है, okay. So these are the this is the alveoli, okay, and which is surrounded by this blood capillary. So ये alveoli है और उसको ये blood capillaries ने suppose कि उसको surround किया है, wrap किया है, okay. तो ये दोनों के जो वॉल है अल्वियोलाई के और ये ब्लड कैपिलरी के, they are in very close association, okay, and their walls are made up of only single layer of cells, and that cells are simple squamous epithelial cells which are based on the basement membrane. तो दोनों भी है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने हैं, दोनों का लेयर जो है वो सेम टाइप के सेल से बना है. नाउ टुगेदर these walls of these walls of these alveoli and the blood capillary, they form the respiratory surface, okay, and this respiratory surface acts as a or this respiratory surface exchange the gases between alveoli to blood capillary and from blood capillary to alveoli. इस तरह से gases का diffusion होता है, okay. Now अब ये गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ से, कौन से गैस का कहाँ से होगा? सो इट दैट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, ओके. सो व्हाट इज दैट पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर मींस जो एयर है एल्वियोलाई की, या अगर एटमॉस्फेयर में भी जो एयर है, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ओके. तो उसमें से पर्टिकुलर किसी गैस का जो भी प्रेशर है, सपोज एयर है तो एयर में ऑक्सीजन है सपोज, तो एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ओके. सो इन दिस वे पार्शियल प्रेशर जो गैसेस जो है वो हायर पार्शियल प्रेशर एरिया से लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया की तरफ डिफ्यूज होते हैं. और कब तक डिफ्यूज होते हैं? until the pressure in two regions reaches equilibrium. दोनों साइड का जो प्रेशर है वो जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये डिफ्यूजन
होता रहता है. ओके, सो यहाँ पे ये दो रीजन्स कौन कौन से हैं, एक तो एल्वियोलाई में जो एयर है वो, और यहाँ ब्लड कैपिलरी, पर्टिकुलरली अभी गैसेस की बात करेंगे हम. एल्वियोलाई में एयर है, बट एयर में से सिर्फ जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज होता है. ओके, एंड जो ब्लड कैपिलरी में बॉडी की तरफ से जो आया है ऑक्सीजन, सॉरी, बॉडी की तरफ से जो आया है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज होता है, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज होता है. ओके, सो इस तरह से ये गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता है. अभी देखिए ये डायग्राम में यू कैन सी हियर, these are blue colored red blood cells are shown, so they carry the large amount of carbon dioxide, that's why they are shown in this blue colored. और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड इन रेड ब्लड सेल्स का कम होता जाता है, और उसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होता जाता है जैसे जैसे. तो डिफ्यूजन होते होते ऑक्सीजन जब पूरी तरह से ये सेल्स में कंप्लीटली जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल्स में आ जाता है, और हीमोग्लोबिन का जब कंप्लीट सैचुरेशन हो जाता है आरबीसी के, तो उस टाइम पे ये यहाँ पे रेड कलर में हम लोग दिखाते हैं. सो दैट दिस शोज द कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट मींस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कि जिसको ऑक्सीजन जाके बाइंड होता है, सो वो हीमोग्लोबिन के सारे साइट्स जो है वो अभी ऑक्सीजन से बाइंड हो गए. दैट इज हीमोग्लोबिन का पूरा सैचुरेशन. जो 4 साइट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, so 4 साइट्स कंप्लीटली इफ दे get bind with the oxygen, then hemoglobin molecule is we said that it is a saturated. Okay, so यहाँ पे partial pressures कितने होते हैं, we let us see that partial pressure. So for the diffusion of gases from higher partial pressure to and the area of a lower partial pressure. So let us see the partial pressures of carbon dioxide and partial pressures of oxygen. Okay, so partial pressure of carbon dioxide of blood एंटरिंग द पल्मोनरी कैपिलरीज. अभी पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो जिन्होंने बॉडी की तरफ से जो ब्लड आया है जिसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सो ज्यादा मतलब कितना, इट इज 45 mmHg होता है इन पल्मोनरी कैपिलरीज, जो कि बॉडी की तरफ से आया है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहेंगे हम, उस ब्लड में 45 mmHg इतना कार्बन डाइऑक्साइड होता है. while the partial pressure of carbon dioxide in alveolar air is 40 mmHg, और alveolar air जो कि हमने इनहेल किया है, इंस्पिरेशन करके हमने इनको लंग्स में लिया है, वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपैरेटिवली इन पल्मोनरी कैपिलरीज. सो इन एल्वियोलर एयर देयर इज 40 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंस हो जाता है. क्या हो जाता है, पार्शियल जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस हो जाता है. यहाँ पे 45 है पल्मोनरी कैपिलरीज में, और alveolar air में वो 40 mmHg है. So due to this difference जो कार्बन डाइऑक्साइड diffuses from capillaries into alveolus. So capillaries में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो alveoli में एंटर हो जाएगा. Okay, then further what happens about the oxygen? Now the partial pressure of oxygen in blood. अभी ब्लड में क्या है, जो ब्लड बॉडी से आया है उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम है क्योंकि ऑलरेडी यूज किया है बॉडी के सेल्स ने डिफरेंट एक्टिविटीज के टाइम, सो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है. और ऐसे कम ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है दैट कम्स टू द लंग्स. ओके, नाउ दैट ऑक्सीजन लंग्स ऑक्सीजन कितना होता है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में, इट्स लेवल इज 40 mmHg. हाउ मच इट इज, 40 mmHg ऑक्सीजन is there in the pulmonary capillaries. On the other hand alveolar alveolar जो air है वो alveolar air में ऑक्सीजन जो है it is a 104 mmHg. how much it is, 104 mmHg. इतना यहाँ पे one correction is there, यहाँ पे air चाहिए, alveolar air. so alveolar air में 104 इतना
ऑक्सीजन का प्रेशर है. So obviously it is much more than the capillary pulmonary capillaries. And then this higher alveolar oxygen enters or diffuses into the pulmonary capillaries. As usual, we said that any gas from any gas passes from higher partial pressure to lower partial pressure. Now in alveoli there is higher partial pressure of oxygen, and in blood capillaries there is a lower pressure. So ultimately this oxygen from alveoli enters into the pulmonary capillaries or diffuse into the pulmonary capillaries, and then blood becomes the oxygenated, and blood becomes oxygenated. And in this way, here these are the oxygenated red blood cells, or we can say blood. Now these capillaries here oxygenated होने के बाद ये blood capillaries reunite होते हैं, and reunite होने के बाद lungs से totally एक lung से दो pulmonary जो veins है now which carry the oxygenated blood, and they will move towards the heart, and they'll carry the oxygenated blood to the left side of the heart. Okay, so this is the external respiration, in which there is an exchange of oxygen and carbon dioxide in between lungs and the alveoli. Okay, so this is for today. If you understood this video, then like, share and subscribe, friends. Thank you.